where we have Saugata Roy of the TMC, who is joining us on the broadcast. Mr. Roy, many thanks for joining us here on Mirror Now. Sir, you know, TMC leader has been, in fact, arrested by the CBI. Anubrata Mondal has been arrested. What are your views? No, I'm sorry that Anubrata Mandal has been arrested. He is a good organizer of our party in Bolpur district. I do not know what evidence CBI has against. CBI is very often used for political purposes. But I'm sure that Anubrata will fight a legal battle against this arrest. Right. So what do you have to say about the allegations against him? I do not think the allegations have really been made public, because there are vague allegations that you are connected with carpet smuggling. But what proof CBI has, will only know when they submit it to the court. Sir, but you know, there are also reports that suggest that he has not been very cooperative with the CBI. What do you have to say about that? He was not well. He gave example. That was his doctors and legal advice. I cannot say much about that. So also we did learn today that he in fact, locked himself up, and he also refused to sign the arrest memo. So how do you sort of justify that? All these details are not known to me. He is 100 miles away in Bolpur, so I can't talk about it. All right, Mr. Roy, many thanks for joining us here on Mirror Now and sharing your views. Right, we are also trying more reactions on this big story that we are following. I'm joined on the phone line by Bengal BJP leader Dilip Gosh. Mr. Ghosh, first of all, thank you for sparing time to speak to us. But this is a developing story that we are covering here on Mirror Now. A big arrest being made by the CBI, where Anubrata Mondal has now been put under arrest. Of course, there's high drama also happening at Birbhum while we speak. But coming back to what TMC has constantly been saying, while BJP, while your party has in fact been leveling big charges, essentially saying that there are big corruption charges against several TMC leaders, TMC looks at it as political vendetta. देखिए, उनके ऊपर बहुत सारा चार्जेस है, केवल करप्शन नहीं है. ऐसे कोल, ऐसे सैंड और जो स्टोन, उसका जो इलीगल ये करते हैं वो, उसका भी जिम्मेदारी है. काऊ ट्रैफिकिंग का ऊपर उनका ऊपर है, और उसके ऊपर आफ्टर पोल, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ है, उसमें भी उनका ऊपर कई करप्शन. पर इस बारे में बात करते हैं ना, अभी पोस्ट पोल प्री पोल वायलेंस जो भी है उस बारे में भी चर्चा नहीं हो रही है. दिलीप साहब, आप हमारे लिए इस बारे में बात करिए कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस में बैक टू बैक सीबीआई अरेस्ट हो रहे हैं या एक्शन हो रहा है टीएमसी लीडर्स के खिलाफ, तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा देख रही है टीएमसी? नहीं, इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा कहाँ से आ गया? कोई पार्टी कोई सरकार की बात नहीं है. उनके ऊपर करप्शन चार्जेस है, और पब्लिक भी इसका ऊपर केसेस किया है, और कोर्ट के आदेश से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है. और एक नहीं, लगातार 4-5-6 केसेस में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है. उसमें जो एसएससी का घोटाला से लेकर के कोल सब प्रकार का है. तो उसका चार्जेस है. उसको 10 बार बुलाया गया, सीबीआई 10 बार बुलाया, चिट्ठी दिया, एक बार आया, वो भी हॉस्पिटल में चले गए. तो आप समझ सकते हैं कितना हिम्मत है उनका. तो उनको अरेस्ट करने के लिए बहुत दिन से मशक्कत चल रहा था. पब्लिक चाह रही थी कि अरेस्ट हो. ऐसे लोग राजनीति को और समाज को कलुषित करते हैं, तो वो काम हुआ है. अच्छा है बंगाल राजनीति के लिए. Right, so just bringing the focus back onto the fact that जैसे हम देख रहे हैं constantly that the TMC is of course also giving very strong comments when it comes to this action being taken by CBI, whether it comes to Partho Chatterjee, the ED of course taking action on Partho Chatterjee, and now the CBI making this arrest of Anubrata Mondal, central agencies being involved in multiple cases involving top TMC leaders. So in that regard, as we have in fact been saying that they are seeing political vendetta, but it's also they have been asking for timely probe, timely investigation into this entire matter. That is something which is missing, because while cases are being filed and investigations are underway, but in having a time-bound investigation is something which is not happening in any of these cases. देखिए, किसी भी केस में टाइम बाउंड नहीं होता है. कोर्ट में भी किसी केस का फैसला नहीं होता है. आज जो वेंडेटा बोल रहे हैं, पार्थो चटर्जी का 200-300 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है,
अनुब्रता मंडल का जो बॉडीगार्ड है, सामान्य कांस्टेबल है, उससे 150 करोड़ का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स मिला है। अब इसके बाद कोई वेंडेटा बोलेगा, कोई बोलेगा मिसयूज हो रहा है, यही तो सेंट्रल फोर्सेस का, सेंट्रल एजेंसी का प्रॉपर यूज हो रहा है, यही होना चाहिए। इनका काम भी ऐसा है। Guys, इतने डॉक्यूमेंट मिलने के बाद कोई अगर बोलता है any तो उसके other बारे में आप क्या phoners? बोलेंगे? Right, Mr. Dilip Ghosh, just wanted to ask one more question. Some would say that it is Abhishek Banerjee's aides who are being targeted. Anubrata Mondal, and we've seen several other people also who are being investigated in this Bengal cattle smuggling case are seen to be close to Abhishek Banerjee, the TMC General Secretary. Do you think, again, how would you respond to this? अगर किसी का खिलाफ कोई सबूत मिलता है, लिंक मिलता है, चाहे काउ स्मगलिंग हो, चाहे कोल स्कैम हो, ये तो बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ का स्कैम है और कितने लोग इसमें जुड़े हुए उसका कोई ठिकाना नहीं, बहुत लंबा तक जाएगा था। तो जिस जिसका नाम आएगा स्वाभाविक उसको पूछेगा, उसको बुलाएगा और डॉक्यूमेंट रहेगा उससे अगेंस्ट में तो अरेस्ट भी होगा, कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, आना चाहिए भी, समाज के लिए जरूरी है। राजनीति का जो बदनाम हुआ है, राजनीति की जो पॉलिटिकल लीडर्स के जो बदनाम हुआ है, कुछ लोगों के चलते हुआ है। पॉलिटिक्स के बारे में, लीडर के बारे में लोगों का विश्वास टूट गया है। कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उसको तो सजा मिलना ही है।